So in a last lecture, we have seen the construction of this double acting reciprocating pump. As its name suggests, the basic difference in a single acting and double acting reciprocating pump is, here you can see there are two suction pipes and two delivery pipes. In single acting reciprocating pump, actually the only one suction pipe and one delivery pipe is there, but here you can see this is suction pipe number 1, suction pipe number 2, and delivery pipe number 1 and delivery pipe number 2. Now this whole double acting reciprocating pump is working with the same principle as we have seen in a single acting reciprocating pump. But we have seen the important difference in between single acting and reciprocating pump in the form of suction pipe and delivery pipe. इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सिंगल एक्टिंग पाइप जैसा ही है, लेकिन सिंगल एक्टिंग पंप और डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो बेसिक डिफरेंस है वो सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप का है. What is going to be happen? Okay, let us see that in a first half stroke, what is going to be happen? This piston will move in left to right direction in a first half of revolution. When piston is moving from left to right, due to the vacuum created in the left hand side, here vacuum is going to be created, and due to this vacuum, the suction wall number 1, that is S1, is going to open, and water will take or water will be inserted towards this side of our cylinder. ओके, जब हाफ रिवॉल्यूशन होता है और पिस्टन लेफ्ट टू राइट मूव हो जाता है तो ये सक्शन वॉल वो ओपन हो जाता है और यहां से जो कुछ भी वाटर है वो अंदर आ जाता है टू दिस पर्टिकुलर साइड. एट द सेम टाइम हियर सम वाटर में बी गेट प्रेजेंट. यहां पहले से कुछ वाटर होगा, वो जो वाटर है that water will be taken outside due to pressure created by this piston. इस पिस्टन की वजह से राइट हैंड साइड में जो भी कुछ वाटर होगा वो वाटर डिलीवरी पाइप के जरिए बाहर निकाला जाएगा इन अ फर्स्ट हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन. इन अ सेकंड हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन योर पिस्टन विल मूव from right direction to the left direction. Understand? Right direction to left direction. Piston आगे की तरफ मूव होगा. In that case, this S1 wall is going to be get closed. D1 wall is going to get open. S2 wall is going to open. And D2 wall is going to be get closed. जब पिस्टन आगे की तरफ मूव होगा तो S1 वॉल क्लोज होगा, D2 वॉल क्लोज होगा, D1 वॉल ओपन होगा और S2 वॉल ओपन होगा. Why the S2 wall is going to be open? Because when you will move this piston to right to left side, then at right hand side of your cylinder, means here vacuum is going to be get generated and the water or that liquid will be taken from some inside this particular cylinder. मैंने कहा था कि पहले जो वाटर यहां मौजूद होगा, जब पहला स्ट्रोक लिया जाएगा तो वाटर डिलीवरी पाइप के जरिए बाहर निकाला जाएगा, तो वाटर
जो यहाँ आता है वो कहां से आता है? जब आपका पिस्टन आगे मूव हो जाता है तब वाटर जो अंदर लिया हुआ रहता है वो जो वाटर है वो जब पिस्टन आपका पीछे की तरफ जाएगा तब उसमें से लिक्विड बाहर निकालने के लिए उस डिलीवरी पाइप से वो लिक्विड बाहर निकलेगा. एंड दिस प्रोसेस continuously going to be happen. When your piston move from right hand side to left hand side, water will be taken inside, and the water which is collected in this cylinder during the previous stroke, पहला जो स्ट्रोक था जहां आपका पिस्टन राइट हैंड साइड को मूव हो रहा था, तब जो वाटर इस S1 वॉल से अंदर आ गया है, इन नेक्स्ट स्ट्रोक that particular water will be taken outside. Means जब आपका पिस्टन मूव आगे होगा तो राइट हैंड साइड में, जब आपका पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा तो राइट हैंड साइड में वाटर सक होगा और लेफ्ट हैंड साइड से वाटर को बाहर भेजा जाएगा. और जब when your piston will move from left to right, at that time water will be taken inside at the left hand side of the cylinder and water will be sent outside at right hand side of the cylinder. Means जो प्रोसेस सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में सिर्फ एक बार होती थी, द सेम प्रोसेस इट इज गेटिंग acted, it is getting happened twice during the one complete stroke. Understand? Try to understand. पहले स्ट्रोक में जब लेफ्ट टू राइट पिस्टन मूव करता है तो यहां से पानी या लिक्विड अंदर लिया जाता है और यहां जो पानी या लिक्विड पहले से मौजूद था उसे डिलीवरी पाइप 2 के जरिए बाहर निकाला जाता है. और जब आपका पिस्टन आगे की तरफ यानी राइट टू लेफ्ट मूव होता है तो S2 साइड में लिक्विड लिया जाता है सक करके और D1 के पाथ से लिक्विड बाहर भेजा जाता है या बाहर थ्रो आउट किया जाता है. वेरी वेरी सिंपल मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म. द ओनली डिफरेंस इज सक्शन पाइप एंड डिलीवरी पाइप्स आर टू ओवर हियर. एंड वन अनदर important and interesting things are there, that the walls which are situated in the cross direction to each other are opening at one time. जो वॉल एक दूसरे से क्रॉस कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, एक्चुअली देयर इज नो कनेक्शन बट इन क्रॉस डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं, that particular walls are getting open at a same time. For example, S1 and D2 are going to open when you will move your piston from left hand side to right hand side, and your S2 and D1, these two walls are going to be get open when you will move piston from right hand side to the left hand side. And such kind of the pumping applications are mostly utilized in the mechanical elements, in the form of mechanical elements in some of the automotive and infrastructure related machines. For example, in the JCB, you know that the arms of the JCB are moving with the hydraulic energy, and that hydraulic pressure are going to be generated by using this double acting reciprocating mechanism in that. Similarly, in the hydraulic crane, the same mechanism has been utilized. Hydraulic elevator, elevator means you know that some of the lifts, you know, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए एफर्ट्स रिड्यूस करने के लिए हम लिफ्ट का यूज करते हैं. वैसे ही जब हम अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं तो हम एलिवेटर का यूज करते हैं. देन हाइड्रोलिक प्रेस, प्रेस मींस इफ यू वांट टू press something with the higher force, then also this mechanism is utilized in that equipment of the hydraulic press. So very simple working.
we have provided over here. And you know that in previous lecture we have discussed its construction, and today we are going to concentrate its working. Its working has been explained to you. It's a diagram you have drawn in your notebooks in a previous lecture. So I request you to write down the important points as far as its working is going to be concerned. Give the heading working. Give the heading working. Working. Crank is completing first half revolution, then piston then piston will move from left hand side to right hand side. Due to this, vacuum is created in left hand side and pressure energy is applied on the liquid at right hand side of cylinder. This is the stroke in which suction is taken place at LHS of cylinder and delivery takes place at right hand side of the cylinder. Number 2, next line. When crank
is completing its next half revolution, when crank is completing next half revolution, when crank is completing next half revolution, and piston will move, and piston will move from right hand side, from right hand side to left hand side, to left hand side, then due to this stroke, due to this stroke, suction takes place, suction takes place at right hand side of the piston, right hand side of the piston, right hand side of the piston, and delivery takes place, delivery takes place, and delivery takes place at left hand side of piston, left hand side of the piston, inside the cylinder, inside the cylinder. Point number 3, for first stroke, for first stroke, suction valve number 1, suction valve number 1 in bracket S1 and delivery valve number 2 in bracket S2 D2, sir. will be open, will be open, and suction valve number 2, suction valve number 2 in bracket S2 and delivery valve number 1, and delivery valve number 1 in bracket D1 remain closed, remain closed, remain closed, remain closed, remain closed. For second stroke, for second stroke,
S2 and D1 wall will be open. S2 and D1 wall will be open and S1 and D2 wall remain closed. S1 and D2 wall remain closed. Remain closed. Okay. In the next line, give heading application of reciprocating pump. Application of reciprocating pump. Application of reciprocating pump. Application of reciprocating pump. Write down in the next line. The mechanism of single acting. The mechanism of single acting. The mechanism of single acting and double acting reciprocating pump will be or are utilized in following equipment. In following equipment. In following equipment. Following equipment. Number 1, JCB. Number 2, hydraulic crane. Hydraulic crane. Hydraulic crane. Hydraulic crane. Number 3, hydraulic elevator. Hydraulic elevator. Hydraulic elevator. ELEVATOR. Hydraulic elevator. And last application is hydraulic press. Hydraulic press. Hydraulic press. Now, the first type, reciprocating pump, and its study we have finished here. The next pump which we are going to learn in this chapter is centrifugal pump. Give next heading centrifugal pump. Centrifugal pump. Centrifugal pump. Centrifugal pump.
Okay. So keep your pen, your notebook aside and concentrate on the screen. So here, the structure of centrifugal pump in front of you. And in that construction, there are some important elements of this centrifugal pump I want to show you. This is the water or liquid sump. Now you know that this terminology of sump is quite familiar with you. आप सबको sump क्या होता है ये पता है. It is nothing but the storage of liquid. Understand? Now here there is a sump, and inside the sump you can see a very important element that is nothing but footwall and strainer. And this footwall and strainer, it has been fixed at the end of your suction pipe. So this is a suction pipe, and at the end this footwall and strainer, it is attached. This footwall specially is one kind of the non-returning wall. Non-returning wall means what? It only allows the water to come inside the suction pipe. ये फुटवॉल क्या करता है कि जो संप में का लिक्विड है या वाटर है उसको सिर्फ सक्शन पाइप में अलाउ करता है आने के लिए, लेकिन जो पानी अंदर आ जाता है पंप करने के बाद वो जो पानी है वो बाहर नहीं भेजा जाता. क्यों नहीं भेजा जाता? बिकॉज देयर इज अ फुटवॉल. Footwall is such a mechanism which allows liquid to flow in a one direction only. पाइप से सिर्फ लिक्विड को वो अंदर आने देता है. एक बार लिक्विड अंदर आ जाए तो उसको फिर से बाहर नहीं जाने देता. एंड दैट्स व्हाई दिस फुटवॉल is very much important as far as centrifugal pump is going to be concerned. कभी कभी हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि पंप ने पाणी छोड दिया है. म्हणजे मराठीमध्ये जर बोलायचं झालं तर आपण एक एकदा असं म्हणतो की पंप मधलं किंवा पाईप मधलं जे काही पाणी आहे ते पाणी सुटलंय किंवा पाणी पाईप मध्ये नाही आहे, पंप मध्ये पाणी भरावं लागेल. सो when you are using this terminology, at that time you will have to understand there may be some problem in your footwall. अगर आपके फुटवॉल में जब कुछ फॉल्ट आता है तब भी आपका पंप जो है वो पानी छोड़ देता है, यानी कि पानी एब्सॉर्ब करना छोड़ देता है. बिकॉज फुटवॉल इज अलाउिंग द वाटर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सम्प टू कम टू द सक्शन पाइप. It does not allow to once again the water present in the suction pipe to go outside of it. So that's why footwall is very much important. Now strainer is nothing but one kind of a net, simple net. एक हम उसे कहते हैं कि वो एक नेट है और उसका वर्किंग क्या है? This particular strainer, it is not allowing lot of dirt to come inside. You know that अगर आपका ये जो पंप है वो अगर किसी कुएं में होगा, अगर आपका पंप किसी बोरवेल में होगा तो वहां पाणी या मड जो होता है, मराठीमध्ये ज्याला चिखल म्हटलं जातं, तर असे बरेचसे पार्टिकल्स आहेत, ऐसे बहुत से पार्टिकल्स हैं जो अगर नेट नहीं होगा तो डायरेक्टली दे में कम इनसाइड द पंप, वो डायरेक्टली आपके पंप में आ सकते हैं और पंप के अंदर जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को पूरा खराब कर सकते हैं. सो दिस स्ट्रेनर इज एक्चुअली वर्किंग एज अ फिल्टर ऑफ योर पंप. देन नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट द सक्शन पाइप.
What is the use of suction pipe? The use of suction pipe is to suck the liquid from the sump and send it to this particular impeller. ये क्या करता है, जो लिक्विड है उसे अंदर ले लेता है और इंपेलर के आय तक उस लिक्विड को छोड़ देता है. एग्जैक्टली ये जो इंपेलर का आय आपको दिख रहा है, this particular height from the ground level is known as suction head. Height of impeller to the ground is known as a suction head, while the top side of the impeller up to delivery spot, it is known as the delivery head. Here it has been shown. ग्राउंड लेवल से इंपेलर के आय तक का जो हाइट है उसे हम सक्शन हेड कहते हैं, और इंपेलर के ऊपर से डिलीवरी पाइप तक का जो हाइट हमको मिलता है हम उसे डिलीवरी हेड कहते हैं. देन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज दिस शाफ्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप. दिस शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द ब्लेड, दिस इंपेलर, and these blades or vanes are connected to the impellers. यानी कि जब शाफ्ट घूमता है तो ये इंपेलर का मैकेनिज्म घूमने लगता है, और ये जो वेन्स होते हैं ये वेन्स भी घूमने लगते हैं. That's why this shaft is very important, the mechanical element inside it. Then next is the impeller. What do you mean by impeller? Impeller is nothing but a rotary disc on which these curved blades are mounted. These are the blades, but these blades are in a curved position. Understand? Then this particular point, it is next, this component is casing. This is the casing. Okay. Casing is nothing but one kind of the cover which we are going to put around this impeller mechanism. ये जो casing है, ये casing इस centrifugal pump का covering है, and two pipes are attached to that casing. First pipe which is attached, it is nothing but the suction pipe, and second pipe which is attached, it is nothing but your delivery pipe. Means delivery pipe and suction pipe are attached to the cover of the pump, and that particular cover of the pump, it is known as the casing of your centrifugal pump. So these are very much important mechanical element of your mechanism. Understand? So now I request you, within these 3 minutes, you please copy it down in your notebook. Tomorrow we are going to, or tomorrow is a holiday. So